Okay, friends, let's start. It's already 6:04. So good afternoon, friends. Market का news देना था, इसीलिए we do this program every whenever the market has some changes. So market में कुछ changes हुई है, which we want to inform so that people are informed. When the buy call came on 4th April, we had done a meeting and then we had a good run for May, June, July. 3.5 महीना तक we enjoyed the run. एंड अगर उस समय अपने इन्वेस्ट किए होते तो अच्छा 4th अप्रैल से बहुत अच्छा रिटर्न आया मार्केट में. नाउ अगेन द मार्केट इज शोइंग सम स्ट्रेस, so we will discuss that. And now again, when the market goes in a sell, it does not mean that you have to sell your portfolio. It is just a knowledge that what are the possible things we can do. Okay, so let's start. And before we start, there is a SEBI disclosure that whatever we discuss, it is not a buy and sell recommendation. It is just for knowledge. So please do your own risk analysis before you do anything in the market. Okay, so we have to say that because that's a very important criteria. Can I get a yes on the disclaimer from everyone? That this is not a sell and buy recommendation or anything. So once I get a yes, then we can start the meeting. Again, I repeat, it is not a sell recommendation. Once I get yes in the chat box, we can start the meeting. Okay, fantastic. So let's go back to the learnings. Let's go back to the learning. Sujit, presentation, please. Value stocks. Yes, please go ahead, Sujit. So friends, ये हम लोग ने एक research किया है. So I'll take you to 5 years of research. Let's go down so that you'll have more belief. This is a monthly data. So if you study, okay. So basically, if you study, the big selling in the market came in COVID. If you study here, they sold 57,000 crore rupees in the cash market. This is the monthly data. Okay. Now, if you study this data, if you put a monthly Nifty chart, this data is more or less accurate. On the monthly Nifty chart, it works more than 85-90%. Okay. The strategy what we are discussing is it works about 70-80% of the time. 2 times it doesn't work. So please do not hold us responsible if we are wrong this time. But 80% of the time it works. Okay, so we are taking a call on the 80%. So if you study March 20, when there was a big fall, there was a selling of 57,000 crore rupees. Okay, now if you go up, that same amount of selling came in October 24. आज अगर आप देखेंगे 57,000 crore in cash market was never sold. Now, if you go to current in October 24, there was a huge sell-off in 1,10,000 rupees sell-off in October 24, and we had a 5-month fall in the market. Okay, so there's a marking going on. So this data gives us some indication that what is the open position of the foreign institutions. Okay, so presently today's data is, I think so we'll have another very big data today, maybe 20-30,000. So right now they have sold 85,000 crore rupees, in which 20,000 crore rupees is a sell trend. So how do we decide a sell trend? This is one thing, is that we have 50,000 crore rupees. Okay. And the second two things which we see is the index. Can you please show the index 50 SMA, please?
Now, please remember, identifying a trend is the biggest skill in the stock market. It is like you know that the market is going to fall. So this is a very, very big skill. And we have learned it with a lot of hard work in 10 years. We have failed many, many times. That's why we are still saying that we may be 70-80% correct only. We have been doing these sessions time and again with people. Nifty, please. Nifty, please. Yes, sir. Yeah. So if you study, it has broken 50 SMA very, very clearly now. So this is a very, if you study, whenever the market is bullish, market never breaks this blue line. It never breaks this blue line. Whenever it breaks now, if you go to October, there's a very important blue line. If you see, whenever the market will rise, it will fall from that blue line only. Okay. So the market had shown a sell trend. So market has shown a sell trend. The blue line was broken on 4th of October. Okay. So in the 4th of October, the blue line broke and the market was continuously going down. If you study for 5 months, whenever it touched the blue line, it fell. Okay. So the trend never changed. So the trend changed. And then if you study, the market was above the blue line for 3.5 months. Now this is again, they have broken the blue line again. So whenever they break the blue line, we might see some correction in the market. Okay, if you don't see it, and this has to be corroborated by the selling in foreign institution. If there is no selling in the foreign institution, then this line has no value. So it now blue line has been broken with 85,000 crore rupees of selling. Okay, so this is not a very good sign, and 85,000 crore is a very huge amount. Okay. Again, I'm repeating that we have been only right 7 or 8 of times in the last 5 years. 2 times we have been wrong. So hopefully we will be right only, but we should always learn that there is nothing called that you know everything in the stock market. We should always be very humble. But according to our study, that this is a very, very big thing which has happened today. Let me show you the small cap index. $100 or $250? 250. Yeah, 100. So the blue line is also broken here. Okay, so this is not a very good sign when all the markets, the cash market, the broader market, everything came in under the blue line with selling. So this is not a very good sign for the market. So we might see have 2 to 3 months of downfall in the market right now. Okay, so this is the learning we have gathered and we are sharing with everyone that no more investments in the market. No more investments till we get a clear direction. There'll be zero investment in the market. Even if you give us money, we are going to put everything in the liquid fund in PMS. And we are creating a strategy which we will share with you. If you're interested, you can do that strategy also to protect some of your money. So we'll share that strategy. Is up to you whether you want to do it or not. Okay, again, it's entirely your call whether you want to do that strategy or not. We are just advising you, where rest is completely your choice. Okay, so there is a big breakout we have seen with the data. Okay, now let us go detail in the, let's go in the options data, value stocks. Click, please, go to the option data.
Okay, click options, 8737, yes. Now, if you study, if you go historically, they have 1,65,000 contract short, net contract, which they are holding. That's an open position in the market. 1,65,000 contracts is a huge amount, huh, by the way. It translates to about 25,000 crore rupees of selling position, $4 billion of sold position they have right now in the stock market. Okay, this is an open position. What is an open position? Open position means that if the market goes up, they will lose money. But so that's a very, very big quantity they have sold. If you go down, when the buy trend came in March and April, if you study, they had from March, if you study, this had become green actually. Go up, please. Anything below 50,000, 1 lakh contract, we are still in a Teji cycle. Please keep going up. Then we had complete greens and it never went more than 50,000 contracts, because till 50,000 minus or 1 lakh minus, we don't react much. Keep going up. Because that is a normal hedge position. So we don't react much actually. Please going up. Yeah. So this was where we started getting worried actually, which was 8th and 9th July. 10 July, the worry started already because they had taken more than 1 lakh positions. But we could not confirm because the cash market had not gone down and Nifty had not broken 50 SMA. But the data was showing that something is very bad because they had a huge open position. Now let's go to index futures. Go back, go to index futures detail. Yes, please click here. Click index futures. C. Yes. Now, if you study the index futures, again, this also, if it goes above 1 lakh contract, it's a very worrisome factor. Okay, if you go down, whenever they go more than 1 lakh, so after March, it had reduced to less than 1 lakh if you study. It had become 1,000, 2,000. Anything more than 1 lakh is a worrisome factor. So there, anything minus, please remember, these are hedge positions also. So if you don't have 1 lakh contract, you don't need to worry much. But again, if you study, keep going up. Now the worry started here actually when we saw 3-4 days. Keep going up. Yeah. July, please. 1 lakh in. Yeah, this was the worry factor now. From 11 July, we were watching same thing that for 11 days, they have more than 1 lakh short contract in index futures. Anytime they have more than 1 lakh short contract, that's a huge amount. Huh? So that's another very worrisome factor which we had in index futures. Now let's go to stock futures. Let's go to stock futures. From 10 July, it was already worrisome that what is going to happen in the market. Okay, so if you study, if you go down 19 lakh, go to 19 lakhs net. Yeah. On 12th May, they had a position of 19 lakh 28,000. Not this one, 19 lakh 20,000 net contract. Number 3 column. Yeah. Number 3, please. Yes. 19 lakh 28,000. And today, if you study, they are into 13. They have already sold 6 lakh stock futures in the last 2 months. 6 lakh stock futures. They have reduced the position. 6 lakh stock futures production has been reduced by the foreign institution. Okay. Now let's study cash data. Go to cash data, please. So cash data is very important. If you study the cash data, again, going down. Same from 10 July, please. 10 July, please. If you study again from 11 July, they are minus. So if you see the trend, same trend in index futures, same trend in cash market, same trend in stock options.
पूरा मार्केट बेच रहे हैं लोग 10-12 दिन से। ओके, सो इतना बड़ा माल इन्होंने 10 दिन में बेचा है, एंड व्हेन दे सेल सच बिग पोजीशन एंड दे आर ओपन पोजीशंस, सो अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी 1-1.5 महीना तो बाजार कुछ होने वाला नहीं है। आइदर मार्केट विल गो डाउन और बी इन अ रेंज। मार्केट ऊपर जाने का चांसेस तो 90% नहीं है, बट मार्केट अगेन वो कैट, प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज ऑलवेज अ, I don't know if you know, there is something called dead cat bounce. What is a dead cat bounce? Obviously जब गिरेगा बहुत जोर तो एक बार बाउंस करेगा, which I'll show you the nifty chart. Please show, go to the nifty chart please. ये देखिए डेली चार्ट प्लीज, इज इट डेली? निफ्टी चार्ट, निफ्टी डेली प्लीज। ये देखिए यहां पर एक बार 50 तोड़ा था 4 दिन पहले। देखिए अब ये 4 दिन पहले तोड़ा था, देन दिस इज अ डेड कैट बाउंस। 300-400 का डेड कैट बाउंस बाजार में होता रहेगा, जहां 300-400 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा वहां पर बेचना ही है अपने मार्केट। हम लोग ये जो लेवल है पर वहां पर लाइन बना देना ऊपर में, ये जो लेवल है, हम लोग जब तक मार्केट 25,300 के ऊपर नहीं जाएगा, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू बाय स्टोरी राइट नाउ। Plus, we need a lot of data to be seen. So according to all the data, it clearly shows that situations, again, nobody can predict the future. Everything is subject to change. कल अमेरिका का डील हो जाता है तो फिर एक बार डेड कैट बाउंस आ जाएगा। तो ये डे टू डे नहीं है प्लीज, दिस इज द ट्रेंड फॉर अबाउट 1.5-2 months। कल बाजार बढ़ जाएगा, मंडे को मत बोलेगा अरे फ्राइडे को बोला बाजार बढ़ गया। दिस इज नॉट ए इंट्राडे कॉल, आई एम टेलिंग यू। This is not an intraday call जो people करते हैं, this is not a trader call. This has been made from investors point of view कि जब 50 ऐसे में दोनों टूट जाता है और इतना बड़ा डेटा बेचता है, so there is a worry for next 2-3 months. There is a huge worry for 2-3 months. Okay, so 2-3 months there is a clear worry in the market. So 10 जुलाई से लेके जो अभी अगर आप constantly देखेंगे, they are continuously selling from 10 जुलाई। There will always be a dead cat bounce of 300-400 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, उसका मतलब नहीं है कि मार्केट बाय ट्रेंड होगी। ओके, नाउ व्हाट आर द स्ट्रेटजीज वी कैन डू? पुट एन एक्सेल शीट प्लीज। व्हाट इज द एक्शन? डेटा समझ गया, एक्शन क्या लेना है? नंबर 1, न्यू इन्वेस्टमेंट्स 0, नो न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट। आई विल बी द ओनली फंड मैनेजर जो आपको बोलेगा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बाजार में। सबको पैसे का भूख है, हमको नहीं है। 0 इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, जब तक बाय कॉल नहीं आता है, अभी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ओके, 1 एक्शन। सेकेंड एक्शन, करंट इन्वेस्टमेंट। This is strategies only for investment purposes. This is not a strategy for traders. This is not a strategy. If you're a trader and you're asking me, please don't be in this group because this is not a trader. I have a separate group for traders जहां पर मैं traders को separate देखता हूं। I have a separate group for traders. Okay, current investment. Okay, you can hold if you're a long term player, just hold on. Don't worry, बाजार नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है। You just hold on because economy में कोई problem नहीं है, markets are strong, but we have to just hold on. So there is one option you can do, don't do anything, just hold on, wait. Number 3, current investments. In PMS, we have already gone to 50% cash, which I'm telling you. We've already gone to 50% cash. If you want to go, we are already in 50% cash from today in PMS. तो हम जो बोलते हैं पहले हम खुद करते हैं। ओके, सो मैं ऑलरेडी 50% कैश में आज चला गया हूं। 50% के ऊपर मेरा बेचने का ताकत है नहीं। प्लीज वेट तुषार, प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तुषार सुरैया। ओके, करंट इन्वेस्टमेंट PMS, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन कैश। नाउ स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्मॉल केस,
So there are two choices, you can hold, और एक हमें strategy अगर इसको चाहिए तो I can give you a strategy where you can buy. There is something called Nippon India ETF liquid Bs. Again, please write Nippon ETF liquid Bs. Please write Nippon ETF liquid Bs. इसमें 450 करोड़ का डेली वॉल्यूम है, एनएससी में ट्रेड होता है ये। हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, तो 50% आप लिक्विड बीज खरीद के रख लीजिए, आपको 4-1% आता रहेगा, 4 to 5% आपको ब्याज मिलता रहेगा। So people had asked me, because in the last strategy, last October when the market fall, this strategy was not, because we took about many years, but last 6-8 महीना में हम लोग ने बहुत मेहनत किया that can we do something, because we can't exit the market. So what you can do is, you can, if you want, you can do 50% liquid Bs, or you just hold on to the strategy. So these are the 4 investments, 4 strategies we can tell you. New investments, 0. Current investments, you can hold. In PMS, we are already into 50% cash. We don't have the guts to go to 100%. क्योंकि market कभी भी move करेगा तो that is not going to go good for us. And number 4, if you want, we can maybe in the small case 50% हम लोग strategy बना देंगे, हम लोग अभी clear कर देंगे, where अगर आप rebalance करोगे automatically Nifty ETF का liquid बीज buy हो जाएगा automatically. आपको कुछ करना नहीं है, just press the rebalance button, 50% stock रह जाएगा, 50% liquid बीज में investment हो जाएगा. Okay, because many people were asking me that ऐसा कुछ करिए where we don't need to sell, we just go into liquid Bs, again we rebalance and again we come back, and which is very easy to manage. Okay, you have to do it yourself, Sunil ji. We don't do it. You have to do it yourself, Sunil ji. हम लोग नहीं करते हैं आपके लिए. Okay, आपको सब खुद करना पड़ता है. You can take the help of Prateek. Prateek will go online and do it for you. He'll help you step by step, but you have to do it because it is an advisory platform. We cannot trade for you. Okay, so friend, this is our view. Again, I'm saying we have been right only 70% of the time. 30% of the time we are wrong. So it's absolutely your call whether you want to just hold on to the investment. Just hold on, don't do anything. Okay, this is not a short-term trading call. क्योंकि हम लोग देखे हैं जब बाजार में ऐसा आता है तो we might see 10-15% पोर्टफोलियो गिर सकता है, 5%, 10%, 15%. ओके, मार्केट फिर ऊपर जाएगा, मैं तो बहुत जल्दी एंट्री भी कर लूंगा. तो आई एम विलिंग टू टेक दैट 2-3% रिस्क इन द मार्केट. इट्स ओके. Okay, so this is the entire strategy. I will open for questions now. Please allow them to ask questions. नमस्ते शैलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉल. जैसे आप ये निपॉन का ETF की बात कर रहे हैं, so this is obviously a debt or liquid fund, right? Now, aren't there other debt or liquid funds which can fetch you 600? This is the only product which has great volumes. तो आप फंस जाएंगे. अच्छा. NSE में जो ट्रेड होता है इसी एक ही प्रोडक्ट है लिक्विड बीज, जिसमें वॉल्यूम बहुत है, तो एंट्री और एग्जिट इज वेरी इजी. डोंट ट्रेड इनटू एनीथिंग जिसमें वॉल्यूम नहीं है. ओके ओके. सर, आपने कहा कि 50% कैश आप PMS में होल्ड कर रहे हैं, एंड उसको लिक्विड में डाल दिए हम लोग कल सुबह. नहीं ठीक है, तो लिक्विड ओके, लेकिन अगर हमारे पास हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी तो हम अपने हिसाब से 50% अभी कैश में कन्वर्ट कर लें. आपने तो आजकल में किया है. इजी नहीं है, बोलना बहुत इजी है. कल बाजार बढ़ जाएगा तो आप मेरे को गाली देंगे. आप सोच समझ के करिए, आपको जो भी करना है. प्लीज डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग, बिकॉज मैं क्लियर बोल रहा हूँ, 30% हम लोग रॉन्ग भी पढ़ते हैं. और अगर कल मेरा बाय होगा तो मैं तुरंत घुस भी जाऊंगा. जो आप लोग फिर वो मेरे को मत पूछेगा कि आपने एंट्री कर लिया, मुझे बताया नहीं, वो मैं नहीं बता सकता हूँ डे टू डे. आई ओनली टेक सेमिनार्स once in 3 months when these calls come. So you have to take your own decision in your own stocks what you want to do. ओके. अच्छा, और एक क्वेश्चन था सर, ये PMS में आपने कहा कि ETF वगैरह आप अपने हिसाब से PMS में तो कर लोगे कि उसमें भी मुझे कुछ नहीं, वो तो कर लिए ऑलरेडी. आज हम बेच दिए, कल वो कर लिए उसको. ओके ओके. So when will you trigger the? मेरे पास है, मैं कर लिया ऑलरेडी. Okay. Sir, when will you trigger the small case rebalancing? I am invested in one of the strategies. वो आज हम लोग का रेडी हो जाएगा. सैटरडे को, मंडे को आप कर सकेंगे. ठीक है.
आपको सर ये हाँ, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। हाँ सर, ये अभी क्या रीजन है मार्केट का गिरने, क्या लगता मैंने है? बता दिया सर ऑलरेडी, आधी घंटा पूरा डेटा देके बता दिया। आप शायद वीडियो नहीं देखे तो नहीं नहीं, मैं रिकॉर्डिंग। देखा था, वीडियो डाटा देखा था सर आपका। कि क्या जो ऐसा कुछ कंडीशन है, जियो पॉलिटिकल कंडीशन या क्या लग रहा है? जियो पॉलिटिकल हम लोग ये देखते नहीं है। हम लोग ने कुछ डेटा रिसर्च किया हुआ है 10 साल से। वो जब डेटा दिखाता है जब भी हम लोग ये कॉल लेते हैं, कोई जियो पॉलिटिकल कंडीशन से नहीं लेते हैं। इनफैक्ट आप बिलीव करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। गो टू द डेटा एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। ये जियो पॉलिटिकल में फंस जाएंगे आप। अरे प्लीज सुजीत, प्लीज ओपन द डेटा प्लीज। या ऐसा कुछ FII का प्रॉफिट बुकिंग? प्लीज शो मी द डेटा प्लीज। आप देखिए मार्च में मंथली प्लीज। अप्रैल में क्या हुआ था? ट्रम्प का ट्रम्प का प्रॉब्लम था टैरिफ का, और इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी टैरिफ हुआ का? था 22 अप्रैल को। समझ गए? और यहां पर क्या थे, अप्रैल में उन लोग बाय करके रखे हुए थे, और बाजार वहां से 3000 पॉइंट बढ़ गए। तो डेटा को फॉलो करिए। वो जियोपॉलिटिकल कंडीशन में जाएंगे तो हरदम रॉन्ग पड़ते हैं। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो मैं बहुत अच्छा सीखा। इफ यू गो डाउन टू मे एंड अप्रैल में और बिफोर द इलेक्शंस, अप्रैल और मई में देखिए दे हैड सोल्ड अ पोजीशन ऑफ 93,000 करोड़। बट ऐसा माहौल बना दिया था मोदी जी ने कि वो जीतेंगे। बट F2s न्यू दैट दे आर नॉट गोइंग टू विन। 1 लाख करोड़ माइनस था उन लोग का, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बाजार 3000 पॉइंट गया। तो ये डेटा को फॉलो करिए। योर एक्यूरेसी इन द मार्केट विल बिकम, सब न्यूज़पेपर सब देखना बंद कर दीजिए। आप इसको देखिए, 1 साल फॉलो करिए, और फिर मानिएगा मैं बता रहा हूं अगेन, ओके 80 to 80% ऑफ द टाइम द डेटा वर्क्स। वो आपको पहले बता देता है क्या होने वाला है, बिकॉज दिस इज एन ओपन पोजीशन ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। दे हैव अ $10 billion शॉर्ट पोजीशन विच इज ओपन, क्लोज नहीं है। They have a $10 billion open position, and that's a huge amount which they have taken in the last 10 days. Okay? ओके सर। फिर मैं बोल रहा हूं 70-80% ही करेक्ट है। अगर 100% करेक्ट होगा तो मैं मुकेश जी के साथ, मुकेश अंबानी के साथ अपना सही है सर। अपना अपना डिसीजन लीजिए। मैं आपको गाइड कर सकता हूं जो मुझे समझ में आता है। राइट सर। मैं बार भी सेमिनार किया हूं। देयर आर 146 पीपल। डोंट ट्रस्ट मी, फॉलो दिस डेटा फॉर 1 year and you'll be surprised. Any geopolitical event आप किसी को देखने का दरकार नहीं है। This data will guide you. Okay? Next question, please. Next सर, question. ये आपने जो इंडेक्स फ्यूचर 11 जुलाई को मोर देन 1 लाख का आपने जो बताया उन्होंने बेचा है, ये भी क्या हम देख पाएंगे क्या आपका Yeah, इसमें? देख पाएंगे फ्री है। हाँ, क्यों नहीं देख पाएंगे? देखिए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इसको हाँ क्लिक करिए पहले, हाँ, क्लिक किया हूँ। फिर देखिए वो स्टॉक फ्यूचर्स को क्लिक करिए, दिखा के क्लिक करना पहले, राउंड सर्कल बना के। देखिए देखिए इसको क्लिक करिए 3080 को। अब देखिए आ एक गया मिनट आप। फ्यूचर है, देखिए अपना ये। अब ये स्टॉक फ्यूचर आ गया। इंडेक्स फ्यूचर को क्लिक करिए, ये देखिए आ गया डेटा। यहां पर 3 क्लिक करना पड़ेगा जब डेटा मिलेगा। सर, एक बार फिर से दिखाइए प्लीज। प्रतीक से सीख लीजिएगा सर, बहुत इजी है सर। थोड़ा मेहनत करिए, प्रतीक से सीख लीजिएगा 1 to 1, वो आपको सिखा देगा सर। तो शैलेश जी, 150 जैसे लोग हैं आप सर अभी यहाँ पे। शैलेश जी जैसे आपने ये कॉल की है, थैंक्स अगेन फॉर दैट। जब अब मार्केट का डेटा आपकी टीम स्टडी कर रही है, व्हेन यू सी द रिवर्सल, यू विल अगेन डू अ कॉल? ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियस, ऑब्वियस। यस प्लीज। If I've understood you correct, you are saying that the trend has started to show in the market and things are now seems to be going down. और अभी यहाँ से करीबन 3 और गिरेगा from the current trend. 70%। Right. धीरज जी, Understood. 70%। Understood. 30% में रॉन्ग हो सकता हूँ, बार बार जी बोल जी, रहा हूँ। fair. कोई भी 100% बोलता है, उन लोग सब भगवान बन रहे हैं। उनके बाद खुद वो लॉस करते हैं। जो भी 100% बात करते हैं ना, उन लोग खुद ही लॉस करते हैं।
They talk big, but they don't have any performance. मेरे पास बहुत data है, जब भी मैं 70% बोलता हूँ. Yes, sir. I want to ask one question. Nifty base, by buying, how it is beneficial to us? Nippon liquid bees. Yeah, okay, Nippon liquid bees. How is it benefiting by buying? You will now? get, आपको ब्याज मिलेगा. अच्छा, वो ब्याज कौन देगा? वो बीज में उसका कैलकुलेशन है, लिक्विड बीज का कैलकुलेशन है. ओके, हम लोग आपका रुपया go down or up as हम per the लोग- market. एक second, वो आपका रुपया लेंगे और मार्केट में लिक्विड फंड में लगाएंगे ओके, और समझ उसका गया। ब्याज आपको देंगे. ठीक है, थैंक यू। क्या होता है कि आपको पूरा चेंज करना, म्यूचुअल फंड में जाना, अकाउंट खोलना, बहुत कल बाय करना है तो वेरी इजी. लिक्विड बीज में लगा हुआ, वहीं बेचा और वहीं से वापस शेयर खरीद लिया. तो रीबैलेंस विल बिकम वेरी इजी. वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम where you can go into cash and again go into and again come back to your stock futures within a click. वैसा सिस्टम बनाया हम लोग. ओके, Yes, this applies to all the strategies, correct. We will take, it is not a US market discussion, so I'm not going to take US market. US market looks very strong to me. The data is very strong. It is all-time high, 6,400. And I think so people have realized that what Donald Trump is doing is right because the market is showing great strength. And another reason is why US is going up, because the money is actually flowing from the emerging market to US. Okay. Another thing, Joe Conway, please show the dollar index, please. Okay, so dollar index, ये 50 SMA, please. Is it 50? Please put it to 50, please, always. Okay, क्या figure है, please? Can you show me the figure? 50 SMA figure, please. 50 SMA, go to the blue line, yes. 98.51 के ऊपर जाएगा, so market और खराब हो जाएगा. So that means now the money is really getting shifted from emerging markets to US markets. So मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अगर आप continuously देखेंगे, that continuous you have the 96.50 से US dollar is getting strong only. You know, ये dollar index, जब ये dollar index strong होता है, that means money is flowing from emerging markets to US. Okay, so that is another concern area. So if you go above 98.51, then there is further pain. But ये हम लोग का एक saving grace है कि हो सकता है हम लोग sideways भी रह जाए market में because of this. Okay, any other questions, friends? Was it helpful? The seminar, I know, मंदी का जब बात करते हैं तो खुशी नहीं होती है, but it is our duty to tell you, because last time जब अक्टूबर में ही आया था, many people said कि अगर हम बता देते, करते नहीं करते, कम से कम बता दीजिए हमें कि आपका व्यू क्या है, you know, because ये व्यू हम लोग पहले नहीं लेते थे, because people, you know, so ये व्यू कम से कम बता दे कि हम लोग का व्यू ये है. Rest is definitely your call, whether you want to take it or not take it. मंदी में भी पैसा बनाना चाहिए. आपकी कॉल आई तो पैसा बनाने का मौका है, और क्या. Yeah, you are a trader or an investor? नहीं, I'm an investor, sir. How will you make money how will you make money? No, in case, since you are moving 50% of the portfolio in liquid, right? So पैसा नहीं बनेगा, पैसा बचेगा. सर, बचेगा बनेगा एक ही होती है. मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड. एक नहीं होता है सर, एक नहीं होता है. पैसा बनना अलग होता है, बचना अलग होता है. ठीक है सर, ओके. कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोग कभी कभी रॉन्ग भी पड़े हैं. 10 बार में हम लोग का पैसा बचा नहीं है, पैसा लग गया है. ये भी ध्यान करेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. जी जी. Hello. Yes, please. Sir, are we taking a Yes. Yes, the rebalance will be done. Once we will check, and then the rebalance will be done. Probably you will be able to do it on Tuesday, because we are Tuesday. searching the technicalities.
99% हो जाएगा, बट हम लोग टेक्निकली देख रहे हैं कि कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना, तो शायद आप ट्यूसडे ही कर पाए। अच्छा, ओके, थैंक यू। बट आई हाईली रिकमेंड, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए, बस नया इन्वेस्टमेंट मत करिए, ये भी मेरा रिकमेंडेशन। मैं 3 स्ट्रैटेजी फिर से बोल रहा हूं, यू कैन अपलोड 3 स्ट्रैटेजीज, प्लीज शो इट, प्लीज शो द 3 स्ट्रैटेजी फ्रॉम द एक्सेल, व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर द मीटिंग। So no new investment, zero. Current investment you can hold. Current investment PMS, we've already gone into 50% cash. And small case investment, either you can hold or you can buy Nippon India liquid Bs. Either of the 4 things is the action which you do. If you're a long-term player, I would just say do number 2, चुपचाप बैठ जाइए, कुछ मत करिए। Just one question. Yes, Yogesh bhai, Hello, can I ask one question? Namaste, namaste. बताइए। Yeah, FIs are in such short position. Isn't it an oversold zone where they any time it could turn around? It can be a dead cat bounce, definitely. Because in the past, no, whenever they have gone such extreme, suddenly there is a smart recovery also. There might be, this होता है, मैं बोला ना 70-80% हम लोग राइट पढ़े हैं, 20% रॉन्ग भी पढ़ सकते हैं योगेश भाई, but Right. because they have open positions of such large magnitude, Correct. 150,000 crores in index future, 150,000 index options, it is not easy Right. now to square off everything. Okay. It's So not at easy. some point they will be looking to square off, no? They might decide that. See, that is again a call which I cannot answer. It is this is just a research. We feel that, they might do it in. Because generally what happens is when it turns around, no, it happens so fast. 2 दिन में ना पूरा गेम ही चेंज कर देते हैं वो लोग. Agreed. That is the risk we have to take. Okay. That's my. That is I say, na, that Thanks. we'll be right only 70-80%, 20% right नहीं हो सकता. Correct. Okay, thanks. Hi, Shailesh sir. Thank you so much for the session, sir. सर माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में भी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको गिरने की गुंजाइश ज्यादा है, तो उसको ऐसा भी कुछ नहीं बोल clean सकते करें या हैं, उसको ऐसा कुछ नहीं. मैं आपको एक 3 साल का डेटा दिखाता हूँ. कैन यू शो द डेटा ऑफ माइक्रो कैप, स्मॉल कैप 250, लार्ज कैप 250 जो हम लोग बनाए थे सुजीत? Yes, sir. शो द कंपैरिजन ना. ये मैं थोड़ा मिथ क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं. आई विल शो यू द मिथ. लॉन्ग टर्म मीन्स जब तक आपको पैसे की दरकार नहीं, अमित जी, फॉर 3 years 5 years. Now, if you study, this is a comparison from 3.5 years. आप देखिए जब भी बाजार गिरा है, तो स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे सिर्फ इस पीरियड में, फरवरी वाले पीरियड में डेफिनेटली लार्ज कैप कम गिरा है 9%. बट अगर आप जब बड़ा सेलिंग आता है तो स्मॉल और माइक्रो ज्यादा गिरता है, जब बहुत बड़ी सेलिंग आती. बट अगर छोटी छोटी सेलिंग में देखेंगे तो सब बराबर सही है. ये हम लोग ने कंपेयर किया है, माइक्रो कैप 250, लार्ज कैप 250 एंड स्मॉल कैप 250. So it is not about caps, it is about the selection of stocks. But definitely large cap कम गिरता है और कम बढ़ता भी है. अगर आप देखेंगे 3 साल में, ये गिरेगा भी कम तो बढ़ेगा भी कम. सर जैसे मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूं, फॉर एग्जांपल 50 लाख पे अभी मैं 5 लाख नुकसान पे हूं, तो अगर मैं ये नुकसान बुक करके 45 लाख कैश अपने हाथ में ले लूं, तो क्या मैं 5-7 लाख और बचा पाऊंगा या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? मुझे मालूम होता तो मैं मुकेश अंबानी के साथ बैठा होता. मैं समझा सर, बट Come स्टिल on, this question is invalid यार. Come on, you can't ask this question. This is invalid question, boss. अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं मुकेश अंबानी के साथ बैठूंगा ना, थोड़ी यहाँ पैसा मैनेज करूंगा. ओके सर. 70% चांसेस है राइट होने का, 30% चांसेस है रॉन्ग होने का. नाउ इट इज योर कॉल. कभी कभी इंट्यूशन कॉल भी होता है यार कि ठीक है मुझे कुछ नहीं करना, और आप राइट भी हो सकते हैं. कभी कभी लगता है नहीं यार राइट लग रहा है मैं भी करता हूं, तो अगेन दैट्स अ पर्सनल कॉल यू हैव टू टेक. करेक्ट सर.
Anybody else? Next questions? Sir, I have a question. Yes. So firstly, thank you for sharing this insightful data, sir. I just wanted to know what is your view on the liquidity which might come in the Indian markets? What liquidity? जैसे अभी जो RBI ने थोड़ा कट किया है रेपो रेट और उसके बाद अभी टैक्सेशंस बहुत में दिन हो भी, गया सर, तो 6 जून को किया था, आज हम लोग जुलाई में बैठे हैं। तो सर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? लाइक लिक्विडिटी अगर बढ़ रही है, पड़ेगा फाइनेंशियल सर्विसेज में। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छी सेक्टर है। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लाइक जितना ज्यादा करेक्शन हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, इकोनॉमी एक सेकंड, मैं कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ करेक्शन। ओके, आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग एनी करेक्शन। द डेटा इज शोइंग दैट अभी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बस। और चुपचाप ओके ओके। और लिक्विडिटी पे सर क्या व्यू है आपका? लिक्विडिटी तो अच्छा ही है, मार्केट का इकोनॉमी तो अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म बाजार तेज ही रहेगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म बाजार तेज रहेगा, इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप होल्ड करो। ओके ओके सर, बट देयर आर थैंक यू सर्टेन सो मच। इन्वेस्टर्स जिसे बहुत जिटरी हो जाते हैं बाजार गिरता है तो टेक अ कॉन्शियस कॉल। मेरे को 50% जाना है, नहीं जाना है। ओके, टेक अ कॉल, ओके दैट्स ऑल। नहीं यार ओके कुछ सर, नहीं करना है, आई एम हैप्पी, जैसा चल रहा है चलने दो। ओके ओके सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू। Shailesh ji, I have a question. बोलिए जी। Hi, Shailesh ji, Gautam Mohta this side. बोलिए गौतम जी, नमस्ते, बताइए। Shailesh ji, I wanted your view on the current Q1 results. What do you think? How they are coming और up? कब कितना How are रिजल्ट्स they आया panning? अभी तक कितना रिजल्ट्स आया है सुजीत? बहुत ज्यादा नहीं, 30-35% आए होंगे अभी तक। तो मैं बताता हूँ आपको कितना है, एग्जैक्ट नंबर दे दो सुजीत। हाउ And मेनी रिजल्ट्स just a follow-up question also, Shailesh ji. Any Sir, I'm sector that seeing. you think is coming up or to watch out for? सॉरी, Any new sector that you think is coming up or to watch out फाइनेंशियल for? सर्विसेज सर, एक ही Yeah. सेक्टर है, जब भी इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा फाइनेंशियल सर्विसेज इज द सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years। मैं 3-4 बार सेमिनार कर चुका हूँ। I know, of course. Sir, एंड अगर आपको मेगा ट्रेंड चाहिए तो एआई, देयर आर 2 सेक्टर्स। मेगा ट्रेंड अगर देखना है तो एआई। sir, 272 stocks. अभी तक 272 का रिजल्ट आ गया है, अबाउट 10%। Mm-hmm. 272 कंपनीज का रिजल्ट आ गया है। So some of the major companies have given the results till now. So what do you think is a trend? Results are in line or? Sajid, how much time will you take to show 272 का previous quarter और ये वाला quarter? How much time will you take? Sir, less than 1 minute. Okay, less than 1 minute. I'll show you the data. 272 companies का जो रिजल्ट आया है वो लास्ट क्वार्टर में उसका क्या प्रॉफिट था वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। 272 कंपनीज का। Okay, great. तो सर फाइनेंशियल में आप अभी भी बुलिश है, लेकिन अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट बजाज फाइनेंस वगैरह में भी नहीं करना है? बोला तो सर, आप कितना बार बोलूं, अमृता एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। आपका इच्छा तो करिए ना, आपका पैसा है, कौन रोका आपको? सर नहीं, पूरा इच्छा मैंने तो रहता है, रामायण बढ़ा लेकिन दिया, बोले सीता कौन है? सर क्या कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? प्लीज आस्क क्वेश्चन, जो बात होगी सर, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना मुझे सर। आपका इच्छा है सर, इज कंप्लीटली योर विश ना सर, आपको करना है कि नहीं करना है। ये जो सेशन है ना सर, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। एज अ फंड मैनेजर, वी माइट बी द ओनली फंड मैनेजर हु विल स्टॉप टेकिंग मनी, और इवन इफ आई गेट मनी आई एम गोइंग टू पुट इन लिक्विड। ओके। मैं अपना कॉल बता रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको करने बोला। अब आपका इच्छा, आप करिए मत करिए, दैट इज योर चॉइस। मैं गलत भी पढ़ता हूँ फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। Is it fair? Do you think it's a fair thing what I'm saying? Is it fair? We have 126 people. Is it fair जो मैं बोल रहा हूँ? 100% फेयर सर। And I get a yes from many people. And I'm talking fairly to everyone. क्या करना है? Yeah, definitely. Again, we are not there. Swati ji, we are not a short-term trader. Please don't ask these questions in this group. We are a pure investing community. We don't deal in future and options. People who are interested in future option, please write. I have a separate group. I have a separate group. I ask them if they're ready to pay, then only add them.
I don't want to waste my time and anybody's time. I have a separate group for future and options. Who does, if you want to write, you can write F&O. So we can ask you, I'll personally call you. If you're interested in F&O, Nifty trading, stock futures, just write F&O and I'll call you. Just put your F&O if you're interested in F&O. I'm sure only 2 or 3 will be there. Nobody has put F&O. Okay. Can you please show the data, Sujit? So this is the net Rakesh profit. Anand, iPhone, I don't know your name, please. I don't know what is iPhone. So you said iPhone, please put your name also. I can't understand your name. If you're interested in F&O, we'll talk separately, not in this group. क्या है कम हुआ है बेसी हुआ है So ये हुआ है. minus की plus The minus. okay that is why the markets are falling. The net profit is down by 4% because the net profits are down by 4%. That's why they are selling. Right. I'll put my numbers because यहाँ पर मेरे difficult हो जाएगा. Just send me a message in my number if you're interested in F&O. Just send me a number. Just send me a message and just write F&O and I'll call you. I've given my number. Please send me text. So maybe the markets are falling because foreign institutions have huge understanding. The profits are down by 4%. So that can be the reason for selling. That can be the reason for selling. 272 companies, the profit is down by 4%. Yes, please ask Manisha ji. Quick question. Yes, please. Good evening, Shailesh ji. बोलिए Manisha ji. Great data as always from a technical perspective. But I have a basic query again. So, I mean, there are a couple of things as you mentioned, results, it could be for financial space or whatever, and also tariff, which is lingering, right? I mean, God knows if he's going back and forth on the India deal also, whatever. And I noticed that for the last 2 days, I think US was down. So this could be momentary also. What if the market bounces back and then in our PMSs, if we are 50% on cash, We'll how take do a you very think? fast call. We're not going to wait. Sorry. Above 25,300 will be back in the market. I've said this also. We are at 25, 24,900. 400 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं. सर मेरा बस कंसर्न है कि लास्ट मतलब ऑलरेडी पिछले सिंस अक्टूबर 2 बार ये करेक्शन और ये हो चुका है ना मतलब फिर वो दोनों 400 बार क्या पॉइंट की हुआ रैली कि हम मिस लोग होती बाद है. में बेचे थे. इस बार हम लोग एकदम टॉप में बेच रहे हैं. दैट इज ओनली द डिफरेंस. तो आप आज बेचे हैं कि 2-3 दिन पहले ही बेच आज ही दिए? बेचे. आज ही हम लोग आज ही बेचे. हम लोग अभी सब टॉप में ही है. अभी भी अगर आप देखेंगे ब्लू चिप वाज इन प्रॉफिट टुडे आल्सो. अच्छा. हाँ आज ही टॉप में बेचे हम अभी भी. ओके आई चेक दी. चेक करिए आपको समझ में आए. ठीक. From quarter to quarter basis, this is Rajiv ji. This is the comparison between March and June, 4%. We have to do Y and Y. Sujit, can you do Y and Y also? Yes, sir. Last June to this June. F&O, please send me a message, because I will not be able to get it. यहाँ पर बहुत सारा message आ रहा है. I request send me a message in my mobile for F&O. I'll put my number again. Just put me a message in my WhatsApp.
17% up. So Y&Y is 17% up. Okay, quarter to quarter is 4% down. So thank you friends for joining. I hope we were able to answer all questions. Again, I'm repeating friends, we may be wrong. So please take your own calls, decide it on your own pace, and please do it on your own consciousness. You know, we are trying. See, हम लोग गलत पढ़ सकते हैं, but sometimes you have to take a call. You know, you have to have the courage to take a call. So मैं call लिया हूँ. Let's see how it happens. Is it good, friends? Was it helpful? Sorry, that it was 3. Okay, so okay, thank you very much. We'll close. Thank you, Shailesh ji. Thank you Please, very Sumit much. ji, again, people are sending the numbers here. Please send Thank you, me on my Shailesh ji. personal Thanks, WhatsApp. Anybody interested in FNO, please send me on my WhatsApp. Okay, thank you very much. Thank you, Shailesh ji. Thank you, Thank you, Shailesh ji. Shailesh ji. Thank you, sir.